नॉर्मली हम लोग कैसे है जो गेस्ट है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, पर इस बार एक छोटा सा ट्विस्ट है। तो मेरा क्वेश्चन पहले हर्ष सर से है कि हु इज कृपालू मेहता? Yeah, sure. Hi everyone. Good afternoon. Instead of introducing myself, I guess I can describe Krupalu because he's also my younger brother. मैं बोलूँगा Krupalu is a genius yet stubborn and a naughty brother. I have seen Krupalu grow up. He's 5 years younger to me, by the way. So I've seen him grow up through various stages of his life, from schooling, college, diploma college, engineering college, and I used to think that I could guide him and have him do what I would envision for him. But Krupalu कभी मेरी सुनता नहीं था. तो I would say कि I'm glad Krupalu ने मेरी नहीं सुनी कभी because कभी he also had his own vision and he followed that और उसका अपना passion था, because of which I would say that he's super successful in his career today. So that's Krupalu for me. Same following up, who is Harsh Mehta? Harsh Mehta is the name that would revolve around the Vivekananda Education Society when I entered the college. Everybody, whoever I went to, the people used to say, "ये हर्ष का भाई है, अच्छा हर्ष मेहता का भाई है." I went to Vikrant Joshi sir, ये हर्ष का भाई है, अच्छा हर्ष का भाई है, बैठो आईडी कार्ड नहीं हो, फोन लेके आए हो, एग्जाम में फोन निकालो, अच्छा हर्ष का भाई है, बैठो. Nothing like that. Vivekanand was always known for the discipline, but Harsh had made his own impact with his name when he was in Vivekanand. When he was in Vivekanand, Polytechnic और engineering college दोनों यही building में था. So I have seen that he used to come from the top floor to down. मतलब जब भी वो graduate हुए from engineering, I was in my first year diploma. He was in his final year of engineering. But we were in the same building. So that was one overlapping time that we had. But engineering में थे वो, तो ज़्यादा टाइम मुझे कॉलेज में नहीं दिखाई देते थे. और मैं फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में था, you know how it is. तो but I always used to hear his name around and मैंने बहुत सारा काम निकाला है just because मैं हर्ष मेहता का भाई. So Harsh sir was a popular guy at the college. Yes. He was very popular. He was known as a genius technically. In engineering also, he has made an impact where an entire lab dedicated to robotic arm was started in the engineering college after him. So that is again something I was really proud of when I entered the college. And for being that stubborn Krupalu Mehta, what he just said, I wanted to make sure कि नहीं जब मैं बाहर निकलूँ तो बोले कि अरे हर्ष मेहता आप कृपालू के भाई हो. Thank you. So clap for Krupalu because Krupalu has changed the narrative. आज मैं जब कॉलेज में आता हूँ तो लोग मुझे सर आप कृपालू के भाई हो, आइए. So Krupalu has had a very successful journey. Polytechnic में भी Krupalu went to Somaya College for his engineering. बट जब मैं पहली बार Krupalu को कॉलेज में लेके आया था जस्ट टू शो हिम अराउंड कि कॉलेज कैसा होता है, जब वो स्कूल में आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में होगा, तो Krupalu को तभी कुछ क्लियर नहीं था कि एग्जैक्टली करियर में क्या करना है, आगे जाके क्या करेंगे, ये कॉलेज कैसा है वर्सेस he was also debating joining another college. So it being the stubborn person he is, it takes Krupalu doesn't say yes very easily, but Krupalu ने मैंने आखिर में सुनी because I showed him around college दिखाया, उसको labs दिखाए मैंने, जोशी सर के पास लेके गया और ultimately Krupalu listened to Joshi sir. And Joshi sir convinced him to join diploma college in Vivekananda, and he wanted to do everything but better than what I had done
in the Polytechnic end. So kudos to Krupalu for that. तो सर यू बोथ आर रियल ब्रदर, आप दोनों सगे भाई हैं, तो आपके करियर पाथ में डिफरेंट ही दिखता है ना थोड़ा बहुत, बट उसमें कंफ्यूजन होता है कि बड़ा कौन है। हाँ मैं सर ये था मेरा शादी के बाद वेट बढ़ने की वजह से। अच्छा अच्छा तो मेरा क्वेश्चन सर पे थोड़ा बाल कम हो गया। कोई नहीं सर, आप फिर भी लग रहे हो, पॉपुलर लग रहे हो। तो मेरा क्वेश्चन था आपके करियर पाथ में डिफरेंट क्यों है? Krupali sir went with running a startup and sir went with for further studies to US. तो आपको ऐसा नहीं लगा कि दोनों भाई मिलके कुछ बड़ा करना चाहिए? तो एक बहुत पॉपुलर स्टोरी है जो मैं सबको कहता हूँ। कृपालू ने 1500 बार सुन चुका है वो स्टोरी और वो शायद अभी थक गया है। वो वेलकम में था ना, मेरी एक टांग निकली है उस टाइप का हो गया। तो हुआ यूँ कि when I graduated from diploma college, to be honest, I wasn't satisfied with the exposure that I had got during my time, and we are talking about 2003. तो तभी कोर्सेस अच्छे थे, मतलब जो पढ़ा रहे थे कॉलेज में ऑल दैट वाज ग्रेट, बट मैं मुझे कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था उस चीज़ से। मुझे और करना था, आई वांटेड टू डू स्टडी मोर, मुझे ज़्यादा एडवांस स्टडीज करनी थी। स्पेसिफिकली मुझे रोबोटिक्स फील्ड में बहुत इंटरेस्ट था। तो अगर आपको नहीं, शायद आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे शायद ये आपको नहीं मिलेगा, बट अगर आप उस टाइम देखेंगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज काफ़ी इवेंट्स करते थे, जैसे प्रैक्टिस है, रोबोटिक्स के काफ़ी कॉम्पिटिशन्स करते थे, हार्डवेयर कॉम्पिटिशन्स। एंड डिप्लोमा कॉलेज में इतना नहीं होता था क्योंकि स्टूडेंट्स अभी यंग होते थे, तो उनको दे हैड टू लर्न बिफोर दे कुड डू एनी ऑफ दैट, राइट। तो मुझे ये चाहिए था कि डिप्लोमा कॉलेज को कैसे स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाए टू लुक आउटसाइड द क्लास स्टडीज, और उसमें रोबोटिक्स, ऑटोमेशन ऐसे टॉपिक्स में कैसे आगे बढ़े। तो मैंने, जैसे कृपालू ने बताया, मैंने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में एक रोबोटिक आर्म बनाया था क्योंकि मैं इतना एंथुसियास्ट था रोबोटिक्स का। मेरे पास आई थिंक इतना स्टैक है रोबोटिक्स सर्टिफिकेट्स का, जो मैं बॉम्बे में सारे कॉलेजेस में जाके जितनी रोबोटिक्स कंपटीशन होती थी वो सब में जाके वो रिमोट कंट्रोल वाली कार चलाता था। So that is how I funded my hobby and my passion, because I would go to a competition, win the prize money, and take that money and build yet another robot to go compete in yet another college. क्योंकि तभी ना पेरेंट्स ना टीचर्स कोई इतना obviously they wouldn't fund you. तो मेरा ये जो हॉबी था, जो पैशन था, I wanted to take it further. मुझे लगा कि शायद इससे मैं अपना प्रोफेशन क्रिएट करूँगा, बट काफ़ी टाइम के बाद एज आई वेंट थ्रू इंजीनियरिंग एंड आई स्टडीड सम ऑफ द एडवांस कोर्सेज, जैसे अभी मैं मैडम से बात कर रहा था, विद्या मैडम बैठी है यहाँ पे। विद्या मैडम एक्चुअली टॉट अस कम्युनिकेशंस कोर्सेज, कम्युनिकेशंस की सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे। तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ, मुझे कम्युनिकेशंस में काफ़ी इंटरेस्ट आ गया, एंड आई फर्दर डिड माय मास्टर्स इन टेलीकम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग फ्रॉम यूएस। आई वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, और वहाँ पे मैंने कम्युनिकेशंस पढ़ाई की, और उसी इंटरेस्ट में से आई एंडेड अप जॉइनिंग अनदर कंपनी व्हिच आई एम करंटली वर्किंग फॉर, जहाँ पे आई वर्क ऑन वायरलेस कम्युनिकेशन क्वाइट अ बिट। तो मेरा जर्नी काफ़ी इंटरेस्ट बेस्ड और हॉबी बेस्ड था, और मुझे चाहिए था कि कहीं ना कहीं कृपालू मुझे फॉलो करे, क्योंकि तभी मेरे फ्रेंड्स भी होते थे। मतलब मैं अभी मैडम को एक स्टोरी बता रहा था, देयर इज अ कलीग ऑफ माइन, ही इज आल्सो एन एलुमनाई ऑफ विवेकानंद, हिज नेम इज नीरव कुमार शाह। उसने मुझे इतना क्लोजली फॉलो किया है, वो मैं यहाँ पे आई यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ मेनी सोसाइटीज, जैसे ISTE है, आई वाज द फाउंडर ऑफ ISTE बाय द वे इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो फर्स्ट ISTE चैप्टर था नेशनली, विवेकानंद को मैंने रजिस्टर किया। तो उस टाइम पे नीरव वाज क्लोजली फॉलोइंग मी, एंड आई वांटेड कृपालू टू फॉलो कि यू नो दिस इज अ गुड करियर पाथ, यू शुड फॉलो मी। तो कहीं टू अ सर्टेन एक्सटेंट ही हर्ड मी, बट एक दिन आया था जब कृपालू वाज रेडी टू सबमिट हिज एप्लीकेशंस टू फॉर हिज मास्टर्स इन US, और उसे काफ़ी कॉलेजेस मैंने शॉर्टलिस्ट करके दी थी कि आप इस ये यूनिवर्सिटीज़ में आप जा सकते हो। कृपालू ने GRE, TOEFL वगैरह सब दे रखा था। He had all his applications ready to submit and go, but एक दिन रात को उसने मुझे फोन किया कि भाई मुझे आपसे बात करनी है, and that was the first time when Krupalu opened up about his true interest
and his hobby and his passion. और कहीं ना कहीं मैं चाह रहा था कि वो मुझे पता चले. That was my Andre Estevan moment. So I would say yes, that was his turning point. जहाँ पे कृपालू opened up and said कि भाई मुझे नहीं लगता है कि मैं मास्टर्स करना चाहता हूँ या यूएस जाना चाहता हूँ. मुझे कुछ करना है इंडिया में और मुझे कुछ करना है इंडिया के लिए. एंड दैट्स व्हेन ही डिसाइडेड कि नहीं मैं यही करूँगा. तो दैट वाज अ वेरी आई ओपनिंग मोमेंट फॉर मी. मुझे लगा कि यार इस चीज़ के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा. एंड आई हैव टू रिस्पेक्ट हिज डिसीजन तभी. और मैंने बोला कि ठीक है, सो क्या करना है आपको. अगर आपको एमएस नहीं करना है, आप यूएस नहीं आ रहे हो, तो व्हाट डू यू वांट टू डू. देखिए भाई मैं यही कुछ करना चाहता हूँ और मैं अपने कॉलेज से स्टार्ट करूँगा. एंड आई एम गोइंग टू स्केल इट अप टू द नेशनल लेवल. आगे की स्टोरी को फॉलो करेंगे. So yeah, about the career path being different. I think most of it on his side he is told, but there are bits and pieces where I got inspired and how I decided to take this path and not go to the masters. When I was here and he was going around colleges, I was closely watching how he would participate in different at that time there were no hackathons. There were only events. After events where you have to just sneak in and you have to win awards and all those things. You are so lucky, you guys, that you have so many hackathons, events, whatever happening, and I still see people not participating. So, of course, the outcome of this conversation is not, one of your chatter events like Coffee with Karan, but it's actually some learnings that you go take away. So, sir, you are at Lutron Electronics working for 11 years. So, my question is, how do you really commit to a thing? You need to really love a thing to commit to it, right? So, how did you find your purpose कि मुझे robotics ही करना है? So, you ended up at Lutron Electronics for 11 years. For 11 years, right? Yes. How did you So I'll share my journey of the 11 years. मैंने जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया, वहाँ से कंप्लीट किया मास्टर्स डिग्री एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया. I was recruited by this company. It is a local company. So the company I work for makes lighting controls. So we make devices that you can dim the lights or you can switch them on and off. And we do this in various ways. मतलब हम बड़ी systems भी बनाते हैं. And मेरा जो interest था, it was mostly in wireless, like wireless networking. So this company specifically allowed me to explore the wireless side of the technology, wherein the teams that I'm working in, or today I actually lead a team. But जब मैंने वो team first join की थी, I think I answered this question. Like I said this thing before, but I think it's the same answer to your question. कि if you love what you do, and if you do what you love, then you don't have to think about commitment. There are also quote, work only works when you're happy at it. Correct. So I had to never think about it as a job, because why not get paid for working on your hobby projects, right? It's essentially that कि मैं on my daily basis जो मैं काम करता हूँ, it is something that I really like to do and I get paid for it. So I never had to think about commitment, and I never realized that I spent 11 years there. और मुझे लाइटिंग से याद आया, मुझे यहाँ पे ऐसे खबर मिली है कि कृपालू सर को व्हाइट लाइट बहुत पसंद नहीं है. व्हाइट लाइट, why you hate white lights? See, बचपन से ना my father and I don't know how you got this information, but मुझे भी ये पता है. नहीं, yeah, like ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई Halloween story नहीं है उसके पीछे. The only thing is कि there is, my father, both of us, we used to go to a lot of 5-star hotels when we were young, and वहाँ पर सब जगह येलो लाइट होती थी. तो ऐसा सपना था कि घर में भी सिर्फ येलो लाइट ही हो, तो वो थोड़ा एम्बियंस बना. That is the okay. हर्ष सर, डिप्लोमा चूज करने का कोई रीजन था? बहुत ही weird reason है, और and I wish I had a better reason. जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, तब मैं इतना नाइव था, या मुझे शायद पता नहीं था कि मुझे करियर में क्या करना है. तो
I ended up choosing diploma, and specifically I didn't choose diploma, I chose VES. Right? So the reason I chose VES क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ, my neighbors actually downstairs मेरे building में my senior एक लड़की थी, she was studying in EHTC, and जब मैं next year pass out करने वाला था, जो vacation थे, तो मैंने उनको बोला कि अभी क्या करना है, कौन सी college join करना है, मैंने कहा कि I go to VES, why don't you come see me? तो मेरे लिए वही transition था, she had me come here, I saw the college, I fell in love with the college, and I decided to join VES, and उसके लिए मुझे diploma करना पड़ा, तो मैंने diploma join किया. Actually, this is not the true story. I mean, this partially true. I mean, to a certain extent it is true. सर आप सच बताओ सर. नहीं, वो सच नहीं. He was one of the person in our family. He was the rancho of our family. To be very honest, he would be the person who जो कभी microwave तो कभी ये fridge या कभी machine को लेके बैठ के उसको खोल के देखने का उनको interest होता है. I'm still not that person. अभी भी कुछ नया आएगा तो he would want to open it first. So I think that curiosity was always there to become an engineer in him. That is inbuilt in him. So that I think that was the true reason कोई लड़की का चक्कर. So I think I'm starting to recollect कि मेरा curiosity हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स में हमेशा है, बचपन से रहा है. since the time I स्कूल के टाइम से मुझे क्यूरियोसिटी रहता था कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैसे चलते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे चलता है. और मेरे ड्यूरिंग माय टाइम वी डिडंट हैव स्मार्टफोन्स, राइट? सो आई वुड सिट देयर एंड ओपन एनी रैंडम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे टीवी रिमोट या कुछ भी हो. तो मेरा जो क्यूरियोसिटी था इलेक्ट्रॉनिक्स में, दैट इज व्हाट लेड मी टू चूज इलेक्ट्रॉनिक्स इन डिप्लोमा एट VES कॉलेज. और आपका रीजन सर, आपने बड़े भाई को देख के लिया या? Yeah, this is I can complete the earlier part where I was always a little bit patriotic, and I wanted genuinely to do something in Indian administrative service. मुझे IAS करना है, to be very honest. तो IAS करने के लिए you need a degree. तो कौन सी डिग्री है वो भी नहीं पता था. I was clueless कि मुझे क्या करना है. He brought me to the college, he showed me. ठीक है, अभी मुझे तो सिर्फ डिग्री से मतलब बात है, मैं IAS करना है. बट इधर आके मेरा चेंज हो गया कि मुझे टेक्निकल में रहना है. अभी कहीं ना कहीं आई एम अलाइनिंग विद माय पेट्रियोटिक सेल्फ. So we are done with the normal round. Now we'll have a rapid fire round now. So the question for both of you all. First question would be, अगर आपको टाइम मिलता है, free time, what is the one thing you do? Like favorite thing to pass time? मैं तो सोता हूँ. I think I cannot live without my sleep. और खास करके after having worked a long day or after having studied a long day, I think if I get any free time, I would take rest. I would focus on my health. Same here sir. मेरा आंसर है हेल्थ. अगर आप सो के हेल्थ बनाना चाहते हो या आप जिम में जाके बनाना चाहते हो, the most important thing in your life is your health. So I would spend our family. I would meet my friends and I would chill. बाकी काम समझ. Sir, chill. I mean, there are many meanings of chill. Yeah, that's what I said. That he is leaving that for interpretation. Open for interpretation. आप समझ लो अभी chill मतलब आपके. Other than extreme sports, which sports do you like the most? Cricket. इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा? आंसर आपके सामने है. मतलब 2023 में इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, मोदी जी और अमित शाह के राज में. मुझे नहीं पता चल रहा है कि कैसे इंडिया नहीं वर्ल्ड कप जीतेगा. इंडिया वर्ल्ड कप कैसे नहीं जीतेगा, उनको जीतना ही है. कृपाल सर आपका? हाँ, obviously we all want India to win, but मुझे लगता है कि एक अभी श्रीलंका के सामने उन्हें हारना चाहिए. तो थोड़ा सर आप जा रहे हो फिर मैच देखने? वानखेड़े में आप जा रहे हो? नहीं, वानखेड़े इंग्लैंड के सामने ऑलमोस्ट हार ही गए थे. थैंक गॉड फिंगर्स क्रॉस्ड. थोड़ा सा हवा में से नीचे आना जरूरी है. तो सर हर्ष सर ने बोला ही इज अ वेरी बिग फूडी. मेरा दोनों क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फेवरेट एंड कंफर्ट फूड अदर देन दाल चावल?
बहुत वो सब सारे बड़े लोग बोलते हैं their favorite food is दाल चावल, other than दाल चावल कौन सा आपका favorite go to food? I am a big fan of chole, but so my wife is a half Punjabi, Okay. so I get. But बाहर जाके क्योंकि मैं जैन खाता हूँ तो मुझे अच्छा छोले मिलता है. So that's I think मेरा favorite food is वड़ा पाव. मुझे कॉलेज में और बाहर जाके वड़ा पाव खाने में बड़ा मजा आता है. And especially because US में कॉलेज की कैंटीन जैसे वड़ा पाव नहीं मिलते. So I think I would say that is my favorite food. Comfort food obviously जो actually food reminds me of one thing. I used to have Jain even in diploma. मेरे सारे फ्रेंड्स चाइनीज समोसा खाते थे. हाँ, सबसे फेमस अभी भी है और मुझे अभी भी नहीं मिलता है. राइट. तो बाहर जो दही पूरी वाले चाचा है, मैं जब कॉलेज से निकलता था मैं दही पूरी वो मैंने जैन दही पूरी रेडी रखी. मेरा और उनका इतना अच्छा जम गया कि आज उनका जो बेटा है वो मेरे क्लाइंट की कंपनी में हेड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पोस्ट है. और दूसरा जो सैड स्टोरी है कि मैंने यहाँ पर 300 ml के थम्स अप दिन में 3 बार पीने स्टार्ट कर दिए. मैं पहले 45 किलो का था, आज मैं ऑलमोस्ट 85 किलो का होने आया हूँ. The credit goes to the canteen of VESP. मुझे थम्स अप की लत लगानी है. सर कभी दोनों भाइयों ने एक दूसरे पे WWE मूव ट्राई किए? सुपरमैन पंच लड़ाई करता था, तभी भी 80 किलो का था. मैंने हिम्मत नहीं की. I think मैंने Krupalu के साथ कभी ट्राई नहीं किया, but I was also a big fan of WWE जब मैं इंडिया में स्कूल में था, तो मैं अपने दोस्तों के साथ काफी जॉन सीना ट्रिपल एच. I would say Undertaker. And his favorite was Kane. Kane. Yeah, and my favorite was The Rock. It's a man. Krupalu actually The Rock की काफी अच्छी नकल करता है. सर एक बार रिव्यू सुनाइए. घर में सबसे ज्यादा शरारती कौन था? Krupalu. मैं. आप कौन से टीचर से सबसे ज्यादा डरते थे कॉलेज टाइम में? सबसे ज्यादा डरता था आई थिंक हमारे टाइम पे यहाँ सक्सेना मैडम हुआ करती थी एंड आई वुड से फैकल्टी भी नॉट कर रहा है तो मतलब आपका आंसर वही है कि द स्कैरियस्ट पर्सन टू मीट. मैं कुछ भी कर लेता था एट ऑल कॉस्ट आई वुड अवॉइड गोइंग टू सक्सेना मैडम ऑफिस, क्योंकि एक बार अगर आप सक्सेना मैडम के ऑफिस में जाते थे तो आपकी बराबर क्लास होती थी. बट एट सम पॉइंट सक्सेना मैडम लेफ्ट. उसके बाद आई थिंक पॉलिटेक्निक में आई वुड से मैं सबसे ज्यादा डरता था वानखेड़े सर. बहुत लोग रिलेट कर रहे मैं हैं. आज भी डरता हूँ. सो आपके हिसाब से अभी सबसे डरावने सबसे ज्यादा किससे डर लगता है? सर अलग अलग ब्रांचेस है तो अलग अलग ओपिनियंस हैं. अच्छा, बिंदु मैम से कितने लोग डरते हैं? पूरा एओ. सर पूरा एओ हाथ उठाएगा. तो सर आपका बिगेस्ट मटेरियल गोल क्या है? अचीव बिगेस्ट मटेरियल गोल अचीव टिल नाउ. अगर आपका कुछ है, अब ये गाड़ी है Achieve till now. अचीव टिल नाउ या फिर एम है, एम टू अचीव. एम टू अचीव है तो इतना मैंने कुछ अचीव किया नहीं मुझे लगता है. मटेरियल गोल आई थिंक गुड क्वेश्चन. मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है. It sounds very weird, but earlier when I was young, I would, if you all have seen Ant-Man 3, तो उसका वो मायामी पे क्लिफ पे घर था. तो ऐसा कुछ मुझे था, but अभी वो सब नहीं है. अभी I just wish के I have a certain piece of land in India कहीं पर where I can spend the entire life. That's enough for me. I think I'm satisfied. आई थिंक मुझे लगा Krupalu बोलेगा मेरा मटेरियल और 2.35 रेटिंग है. अभी बहुत अच्छे भी फ्राई कर दिया. सर आपका मेरा आई थिंक अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, बट आई वुड से बचपन से कार्स का बहुत शौक था मुझे. आई यूज्ड टू लव ड्राइविंग कार्स. पार्ट ऑफ माय एडवेंचर स्पोर्ट्स your favorite car?
I drive my favorite car. I drive a BMW. So मेरा material तो वही था कि लाइफ में कभी एक BMW लूँगा and I'll drive it around. I am happy to say कि See, by now a lot of people have already made their mind कि मैं US जा रहा हूँ, मैं US नहीं जा रहा हूँ. I think most of the people are already, you know, थोड़ा नहीं ऐसा कुछ नहीं है. I think relatively अभी तो काफी easy हो गया है, but बचपन से मुझे कार्स का काफी शौक था. Even robotics के थ्रू मैं कार्स बना रहा था. So there's a very interesting competition that happens in US today. It's called F110. अगर किसी ने सुना है, so basically it's a 110 scaled down version of F1 racing, but you have to build your own car. Oh, that's it. तो मेरा अगर लाइफ में कभी गोल रहेगा आगे, तो I'd like to buy a Ferrari. Sure, sir. That will happen one day. सर आपके जिंदगी का अभी तक का सबसे फनी स्टोरी बताओ अभी तक का. दोनों भाइयों का हाँ दोनों भाइयों का एक तो मिलके भी कौन सा फनी स्टोरी अगर आपने किया होगा बचपन में मिलके तो मुझे याद बट ऐसे तो बहुत सारे स्टोरी है. लेकिन आपको लगता है एक ज्यादा फनी है बहुत सुनाना चाहिए हमें. I think if I talk about college का ही अगर मैं बोलूँ तो you know when we were doing Anvesh, right, I was the anchor for most of the times, right? So the funniest, I mean it might not sound funny, but the funniest part was after Anvesh on one of the days, Wankhede sir was standing in one of the labs. उनका लैब था जावा का और मैं गया तो वहाँ पर सारे लोग ऐसे खड़े हुए थे और वानखेड़े सर बीच में थे. तो ये क्या चल रहा है, तो मुझे समझा कि वानखेड़े सर मेरा नकल कर रहे हैं स्टूडेंट्स के सामने. And I mean that wasn't funny for me, it was scary, but after that the funny part was कि मैंने सर का परमिशन लेके सर का नकल सर के सामने सबके सामने किया. सर आपका वही मूवमेंट ऐसे फनी है. तो वानखेड़े सर का एक और स्टोरी है जो काफी फनी है, जो मेरे बैच में हुआ करता था. आई वाज जस्ट टॉकिंग टू मैम कि मेरे क्लास में एक लड़का था, उसका नाम था निकी करके, बहुत शैतान बच्चा था. एंड we used to all hang out with him, but he had a very funny story with वानखेड़े सर. उसको एक दिन सर ने क्लास से निकाल दिया. उसको वो शायद मोबाइल पे बात कर रहा था या टेक्स्ट कर रहा था, उसको बोला तू और निकल जा. तो उसको ना बहुत गुस्सा है. तो ऐसे मस्ती में हम बात करने लगे. तो एक दिन निकी और उसके फ्रेंड्स, मैं भी वहीं खड़ा था, तो मैंने सुन लिया. बट वो सारे बच्चे कैंटीन के बाहर खड़े रहकर वानखेड़े सर की ऐसे नकल कर रहे थे एंड दे वर मेकिंग फन ऑफ हिम. बट उसने कहीं तो ऐसा कुछ बोल दिया कि एक दिन ना एक बोरी लेके आता, बहुत बड़ा बैग, और बोरी में डाल के लेके जाते. और टर्न्स आउट वानखेड़े सर पीछे ही खड़े थे. वानखेड़े सर नेक्स्ट दिन सुबह आए क्लास में, कहे मेरे को बोरी में डालेगा तू. Sometimes वानखेड़े सर would remind me of serious version of बाबूराव. सर आप बना मत दिखने हो जाएगा सर का भी. डिक्लेयर मत करना. रूपन ने बोला याद रखना. But sir was वानखेड़े सर was one of the people जो उसी टाइम पे जब मैं नकल उतारी तब उन्होंने सबके सामने, तब मैं 3rd ईयर में था, पूरी क्लास के सामने बोला कि तुम लोग देखना मैं इसको नंबर 1 बनाएगा. मतलब सर क्या नंबर 1 नहीं, तेरा रैंक आएगा देखना, तू जितना चिल्लाना हम उसमें चिल्ला रहे. ठीक बोला ओके सर. उन्होंने वो बीड़ा उठाया एंड आई नंबर 1 बट नहीं, बट मैं 3rd रैंक आया मेरा कंपनी में. तो मैं तू प्रोग्रामिंग नहीं करेगा तो तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं. तो रात को बिठा के 12 बजे में प्रोग्रामिंग करवाऊंगा उनके सामने. रात को 10 बजे अन्वेष के टाइम पे मैंने जावा का कोड लिखा था, स्टिल रिमेंबर. सो दैट क्रेडिट गोज टू मी. हो गया थोड़ा. मेरे केस में वानखेड़े सर क्लासरूम में आए. हाँ, रोल नंबर 9, 10, 11, 12 उठो, मेरे को बोरी में कौन डाले बाहर क्लास के बाद. I think it was his favorite punishment कि वो सीधा उठा के
क्लास के बाहर ही फेंक देते थे पर हमारे टाइम पे। तो एक बट आई मीन इवेंचुअली हम जब ग्रेजुएट हो गए तब हमें बहुत मजा आता था। एंड ही वाज वेरी फ्रैंक विद स्टूडेंट्स। आई थिंक आज भी वो काफी स्टूडेंट्स के साथ काफी फ्रेंडली रहते हैं आउट ऑफ द क्लास एंड ही गिव्स यू सम रियली गुड लाइफ एडवाइस। So I think I owe credit to Ankade sir for inspiring me to do some of the things I have done in my life. Big round of applause for the sport Ankade sir.